Assalamu alaikum. This is me, Muhammad Hasnain, Pakistan's English journalist. And today मैं आज आया हूँ काका साहब बाग. और ये बाग बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जस्ट मेरे बैग के अंदर ये सब कुछ देख सकते हैं. इट्स वेरी ग्रीन, स्पेशली प्लीजिंग टू माई आईज़ को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब आप इस तरह की सीनरीज को देखते हैं. और स्पेशली यहाँ का आई कैन सी द स्पेशल ऑरेंजेस दैट वी जस्ट एट were magnificent. और बहुत ज़्यादा मज़ा आया. हमने कुछ घर के लिए रख दिए और 15-16 हम लोग अभी खा लेंगे. और ये जगह एक ऐसी बाग है जहाँ से ओवरऑल द कंट्री से बाहर कंट्री के मुख्तलिफ शहरें, फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब वगैरह, इन सब जगह को ऑरेंजेस एक्सपोर्ट किए जाते हैं. और अगर देखा जाए तो इसका नाम है काका साहब बाग, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करीब है काका साहब मज़ार के साथ. और अब इसे किसी को भी काका साहब एक ऐसी शख्सियत है जिनका कोई आई कैन सी कोई नाम या कोई इंट्रोडक्शन के वो मोहताज नहीं है. ये वही औलिया हैं हमारे पुराने वक्तों के कि जिनकी वजह से ये दुनिया आबाद थी और जिनके वजह से हम सब लोग जो है अपने दीन की तरफ, अपने इस्लाम की तरफ करीब आए. इन द एज ऑफ डार्कनेस जहाँ पर सब लोग गुमराह हो रहे थे, ये वो लोग थे जो कि हमें वापस लाए और हमें सिखाया कि क्या हमें हमारा दीन क्या चीज़ें सिखाता है और हम हैं क्या और हमारी असलियत क्या. इन्होंने जीते जी दुनिया को ठुकराया और अपनी आखिरत को ज़्यादा तरजीह दी. और ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला के साथ ही इनका एक कनेक्शन होता है. ये अल्लाह ताला के वो दोस्त की कैटेगरी में आते हैं. इंसान जब अपने नफ्स को मार देता है तभी वो अल्लाह ताला के करीब जा सकता है, क्योंकि ये नफ्स एक किस्म की दीवार है जो कि आपको अपनी डेस्टिनेशन से ब्लॉक कर रही है. पर जब आप इस दीवार को ख़त्म करेंगे या इसे पास करेंगे तभी आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो, जो कि अल्लाह ताला की रज़ाई, अल्लाह ताला के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करना. यही हमारा एक किस्म का एक एम्बिशन होना चाहिए. जी अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला ने इसलिए हमारे लिए इतनी खूबसूरत, इतनी ठंडी, एक आंख को ठंडक देने वाली, एक ग्रीनिश, एक हर किस्म का रंग इस दुनिया के अंदर पैदा किया कि जिसको हम लोग देखें तो वो हमें प्लीज़ करता है. क्यों? यह सब कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है और ये सब कुछ हमें मिलेगा. बट उससे ज़्यादा जिस चीज़ को हमें तरजीह देनी चाहिए वो है अल्लाह ताला और आखिरत. और इस रंगों का, इस सब का नमूना ये एक बाग भी है जिसके अंदर आज मैं खड़ा हुआ हूँ. तो चले आज जाते हैं बाग में, थोड़ा सा भागेंगे, दौड़ेंगे, थोड़ा सा खाएंगे. Hey friends, hello, I'm here. You guys can see me. I'm here inside of a tree. Technically, I'm sitting in a tree's branch. I'm very scared because this is a very weak branch, but still a very strong one because it's handling me from the last like 10 minutes. And as you guys can see, I'm full of branches. I'm totally stuck here in branches, and I'm here for cutting down some oranges. You guys can see here. So let's cut some oranges. I want to get the sweetest among all of them. So I'm gonna get the best one. Yes, I've got a good one. Let's see. So friends, as you guys can see, I'm not very good at cutting stuff. I'm sorry, but I'm not a good chef. And I'm very bad at stuff like this. And I'm very sorry for brutally killing this orange. I'm very much sorry. But still, anyways, let's have a bite. You can see, I want to give a message to all of the media. I want to give an international message to all of the people from abroad, from other countries, etc. People, we are friendly people. Our Pakistan exports one of the best quality of oranges in the whole world. Our country is one of the cleanest and one of the most beautiful countries with natural, what we can call natural sceneries, with natural beauty. Other than going to New Zealand and Switzerland, you can come to our country for beautiful things. There is cultural respect. Our culture is rich. It's full of different historical places, different beautiful places. You can find everything here. Let's have a bite. Oh my God, this is so sweet. No, really, I'm not joking. This is much more sweeter than what I had lastly.
This is much more sweeter. So with this, this is all, friends. And with the next video, I'll be with all of you people. And enjoy. Stay relaxed.